Let's start chapter number 6. It's memory and data storage. Okay, it is going to be a little introduction about that chapter. This chapter is very interesting, like in which we are going to learn file formats such as MIDI, MP3 and JPG. And other very important technique which is we are going to learn in this chapter is file compression technique, primary, secondary and offline storages, and also magnetic, optical and solid state media. Okay, now MIDI is basically musical instrumental digital interface. What is this? This is always associated with the storage of music file. However, MIDI files are not music and don't contain any sound. They are very different to, for example, MP3 files. MIDI is essentially a communication protocol that allows electronic musical instruments to interact with each other. The MIDI protocol use 8-bit serial transmission. This is very important. Which transmission? 8-bit transmission is followed by MIDI with one start bit and one stop bit, and is therefore सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस डाटा कम्युनिकेशन हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं. और इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? MIDI फाइल कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट इंस्ट्रक्ट अ डिवाइस, फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉनिक organ like sound card and computer in a mobile phone how to produce particular sound or music notes. Each MIDI command has specific sequence bytes. The first byte is the status byte, and this is informs the MIDI device what function to perform. Encoded in the status byte is the MIDI channel. MIDI operates on 16 different channels which are numbered 0 to 15. Let's have to go through with the example that note of on and off. This indicates that a key on an electronic keyboard has been pressed, released or to produced, stop producing a musical note. Key pressure. What is key pressure? This indicates how hard the key has pressed. This includes, or you can say the indicate loudness of the music note or whether an vibrator has been used and so on. Basically, व्हाट इज़ MIDI? तो फिर MIDI है क्या? MIDI के बारे में मैं आपको इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ओल्ड हमारे पास बेसिकली जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अगर मैंने उन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट करना है तो MIDI हमें एक प्रोटोकॉल या एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि उन तमाम चीज़ों को, जितनी भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनको हम कंप्यूटर के ज़रिए ऑपरेट कर सकें. दैट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ MIDI. Now let's see Mega 3 or MP3 and Mega 4 और MP4. बेसिकली ये क्या, हमारे पास MP3 और MP4 दो फॉर्मेट्स हैं, ठीक है, जो ऑडियो कंप्रेशन के अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है. और इसके अंदर जैसे वो आपको बता रहे हैं कि MP3 को पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूज़ टेक्नोलॉजी नोन एज ऑडियो कंप्रेशन to convert music and other sound into MP3 file format. Essentially, this compression technology will reduce the size of a normal music file by about 90%. यानी आपके पास ये 90% तक आपकी फ़ाइल का साइज़ रिड्यूस कर देता है. लाइक फॉर एग्जांपल एन 80 मेगाबाइट म्यूज़िक CD जो है that can be reduced to 8 megabyte using MP3 technology. MP3 files are used to MP3 players, computers, mobiles. Files can be downloaded from internet. तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपके पास दो तरह के हमारे पास एक फॉर्मेट है. लाइक आप अगर एक CD बाय करते हो, उस CD के अंदर आप जो टोटल आपके पास 12 सॉन्ग्स होते हैं, लेकिन उसी की जगह अगर आप एक MP3 की CD बाय करते हो तो उसके अंदर लाइक मोर देन 100 सॉन्ग्स होते हैं. कैन इट बी पॉसिबल? येस, बिल्कुल. लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जो क्वालिटी आपको वो 12 सॉन्ग्स देंगे वो कभी भी आपको जो है ये MP3 फॉर्मेट तो नहीं देगा, ठीक है. सो बेसिकली ऑडियो कंप्रेशन के अंदर अगर हम बात करें तो MP3 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें ऑडियो कंप्रेशन मिलता है. और इसी तरह से लेट्स टॉक अबाउट MP4. MP4 फाइल आर स्लाइटली डिफरेंट to MP3 files. This format allowed the storage of multimedia files rather than just a sound, music, video, photos and animation can all be stored in MP3 format.
अब हमारे पास MP3 और MP4 में एक मेजर डिफरेंस आ गया कि MP3 फॉर्मेट जो है दैट होल्ड्स ओनली द ऑडियो एंड MP4 होल्ड्स बोथ वीडियो एंड ऑडियो. Okay, now Joint Photographic Expert Group JPEG, that is mean basically इमेज को हम किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने जो है वॉइस कंप्रेशन के बारे में देखा और अब हम देखते हैं कि हम एक इमेज को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं. इसी के अंदर जिस तरह आप इस इमेज के अंदर देखें कि आपके पास 5 इमेजेस दिखाए हुए हैं ABCDE और एक ही इमेज को 5 दफ़ा दिखाया हुआ है. बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, द रेजोल्यूशन ऑफ अ फोटोग्राफ इज़ रिड्यूस फ्रॉम A to E. ठीक है, और फोटोग्राफ A and B आर वेरी शार्प. ठीक है, वाइल D इज़ वेरी फिजी and E is almost unrecognized. This is the result of changing the number of pixels per centimeter used to store the image. That is reduced the picture resolution. When a photograph file undergoes file compression, the size of the file is reduced. The trade-off for this reduced file size is reduced quality of the image. One of the file format used to reduce photographic file size is known as JPEG. This is another example of lossy file compression. As with MP3 format, once the image is subjected to the JPG compression algorithm, a new file is formed and the original file can no longer be constructed. JPEG will reduce the raw bitmap image by the factor of between 5 and 15 depending on the quality of ओरिजिनल. दैट मीन्स बेसिकली कि आपके पास एक इमेज है, जब आप किसी भी इमेज को अगर कंप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी जो है वो हमारी कॉम्प्रोमाइज़ होगी. और वैसे भी हम जो इसमें टेक्निक यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ नोन एज लॉसी फाइल कंप्रेशन. और लॉसी फाइल कंप्रेशन के अंदर हमारा डाटा जो है वो दोबारा से वापस अपनी रियल हालत में नहीं आ सकता. ठीक है, और इसके अंदर लेकिन एक ज़रूर है कि ये बेसिकली हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा को रिड्यूस कर देता है, एक फ़ाइल साइज़ को बहुत कम रिड्यूस कर देता है. अब इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट कि अगर मुझे क्वालिटी चाहिए तो फिर हम इस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर को JPG को नहीं यूज़ करेंगे. इसीलिए इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल ये है कि अगर आप बहुत से प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर्स देखें वो आज भी बहुत पुराना ओल्ड कैमरा यूज़ करते हैं. अगर कोई मूवी वगैरह बनती भी देखी हो तो उसके ऊपर भी वो जो मैग्नेटिक टेप को फॉलो करते हैं बेसिकली वो लोग वो उसको फॉलो करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे पास जितनी भी USB ड्राइव्स हैं और जितनी भी हमारे पास जो SSD कार्ड्स हैं उन तमाम के अंदर कंप्रेशन सॉफ्टवेयर यूज़ होता है. ठीक है, और उस कंप्रेशन सॉफ्टवेयर की वजह से क्वालिटी डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होती है. सो JPG, लेकिन वही बात आ जाती है कि हमारे पास JPEG फॉर्मेट क्यों हमारे पास हुआ. उसकी रीज़न ये है उसके इतना पॉपुलर होने की कि इंटरनेट के ऊपर हम इजीली इसको डाटा को ट्रांसमिट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें और इमेज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकें. दैट इज़ व्हाट अबाउट द JPG इज़. Now memory and data storage. There are many files formats used to store data, being this text, image or sound in a computer system. This chapter will consider how file compression is used to save memory when storing different type of files. All computer systems has primary memory and secondary storage memory, and main technology used are magnetic, optical and solid state storage devices which used each of these technology will be described later in this chapter. Together we are number of applications और हमारे पास फाइल फॉर्मेट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं जो अभी हम पहले गो थ्रू कर चुके हैं. दैट इज़ MIDI, MP4, MP3, JPG and text and number.